Hello students, today we will study at chapter number 4 for class 6 for subject social science. In the previous video we studied our chapter, now we will solve the exercise. Let's get started. Question number first, a multiple choice question, tick the correct answers. First, a political map of India shows major train route, longitude and time, स्टेट एंड कैपिटल एंड माउंटेन एंड रिवर्स. तो हम आंसर लगाएंगे स्टेट एंड कैपिटल्स. सेकेंड, लोकेशन ऑफ शॉप, सिनेमा हॉल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा इन आवर नेबरहुड कैन बी शोन यूजिंग अ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, स्केच और प्लान. तो हम इसका आंसर लगाएंगे स्केच. 3, स्केल ऑन अ मैप इज एन असेंशियल रिक्वायरमेंट. First, to show cardinal direction, to find intermediate direction, to measure distance, to show symbols. तो इसका आंसर हम लगाएंगे to measure distance. Question number second, B, fill in the blank. First, all map are drawn using dash scale. तो हम यहाँ पर fill करेंगे verbal. Second, a map that shows mountain, river, desert, etc. is called dash map, physical map. Third, a ratio between distance on the ground and distance on the map dash. तो अब यहाँ पर फिल करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. Fourth, on dash is a collection of map. तो अटलास. और फिफ्थ, dash, dash, dash and dash are intermediate direction. तो हम फिल करेंगे NW, SW, NE, SE. Question number C, state whether true or false. First, the science of map making is called cartography. तो इसका आंसर होगा true. Second, the globe is the actual representation of the earth. True. Third, 1 centimeter is equal to 500 kilometer is a small scale map. False. 4, 1 centimeter is equal to 2 kilometer is a small scale map. True. Question number D, differentiate between the following. First, cardinal and intermediate directions. तो इसका आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट, geographers use the four cardinal direction north, south, east and west to describe the relative location of a place. Second, the four direction in between the cardinal point are the intermediate point. The direction between north and west will be northwest. Question number second, globe and map. इसका आंसर हम लिखेंगे ग्लोब. अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज नोन एज अ ग्लोब. मैप का हम लिखेंगे अ मैप इज अ फ्लैट सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस. इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस इन अ सिंपल एंड ग्राफिक मैनर एंड हेल्प टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर इन रिलेशन टू other people and places. Question number 3, sketch and plans. इसका हम आंसर लिखेंगे स्केच का. फर्स्ट, a rough drawing used to show the location of a place. Second, sketches have no scale to give accurate measurement of distance. Third, such drawings are used as a base for preparing a proper fine plan or a map at a later stage. Fourth example, a shop on a street, a temple on the far side of your town, a picnic spot, etc. अब प्लान देखेंगे हम. First, these are drawing of a small area on a large scale. Second, these are accurate made by architect and town planner. Third, plans are made to scale and show correct direction.
Fourth example, layout of building, parks, hospitals, etc. Question number E, define the terms. First है atlas. इसका आंसर लिखेंगे atlas, a collection of map of the world, the continent and selected countries. Beside map, an atlas may also include information and diagram dealing with topic like the earth, space, geographical feature and population data. सेकेंड है लाइनर स्केल. तो हम इसका लिखेंगे मैप्स हैव अ लाइनर स्केल और स्केल बार इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज डिवाइडेड कन्वीनियंटली इन टर्म ऑफ डिस्टेंसेस ऑन द अर्थ. थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस. तो इसका हम लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ स्केल the unit are not mentioned and the ratio is represented as a fraction. फ्रैक्शन. अब देखिए रेशियो हम ये लिखेंगे 1:250,000,000. तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2,50,000 ऐसा हम लिखेंगे. देन 1 unit of measurement on the map is equal to values of the same unit on the ground. 1 centimeter represented by 1 kilometer can be represented as 10,000. It's not 10,000, it's 1 lakh. Okay. On most top, the scale is shown by the liner scale. इस तरह से हम स्केल बनाएंगे. तो स्केल हम देखेंगे 1 centimeter is equal to 100 kilometer. This means that 1 centimeter on the map represents 100 kilometer of the actual areas represented. फोर्थ हम देखेंगे कन्वेंशनल साइंस. आंसर लिखेंगे मोस्ट मैप ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज सर्टन स्टैंडर्ड सिंबल्स विच मेक देम इजी टू अंडरस्टैंड. तो हम लिखेंगे देयर इज अन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग दिस सिंबल टू शो डिफरेंट फीचर इन मैप्स. देन क्वेश्चन नंबर एफ, very short answer type questions. First, what is the north line? इसका आंसर हम लिखेंगे first, a map has an arrow which points to the north. It is called the north line, which is usually on top of the map. Second, if the north line is not shown, north is usually on the top of the map. सेकेंड क्वेश्चन, मेंशन मेनी टाइप ऑफ मैप्स. तो हम लिखेंगे इसका आंसर पॉलिटिकल, फिजिकल एंड थेमेटिक. थर्ड, व्हाट आर लार्ज स्केल मैप्स. तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1 centimeter represent only 1 kilometer and many more feature can be shown. Such map are called large scale map. Fourth, what is a plan. तो इसका आंसर हम लिखेंगे These are drawing of a small area on a large scale. Question number 5, what do you mean by verbal scale. तो इसका आंसर हम लिखेंगे in this type of scale the unit is mentioned. 1 centimeter is equal to 10 kilometers और 1 inch is equal to 5 meals. अब इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे.